Good morning, audience. Today is going to be our first meeting of ACCA SBL March 2019 case study. Okay, we'll have 3 case studies. This first one, as usual, we'll talk about the question. We'll read the question paper. We'll talk about the question paper, the planning, and all that. And then in next 2 meetings, we'll be doing the answer thing. Okay. Achha. Let me share my screen also. There you go. Okay, this case study is once again very interesting, और मैं ऐसे कहूँगा it's up to the mark, covering lot of areas of ACCA SBL. जैसे वही case study थी chocolate, तो उसमें वो बात नहीं थी, यानी वो मैं उसको कहता था कि एवरेज से थोड़ा बिलो, लेकिन इसको मैं एवरेज और अबव एवरेज कहूँगा, सही है ना? Not a specialized industry. Everybody is aware about this retail garments. उस industry के बारे में सबको पता है, because everybody is fond of fashion. वेयरिंग क्लोथ्स, सही है ना? ये सारी चीजें तो हमारी वार्डरोब में भरे पड़े, तो ऐसी कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है ना? तो गुड टू गो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द केस, मैं 2 बातें करना चाहूंगा। पहली बात जो कि एवरी टाइम आई से कि व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग रीडिंग द केस, रीडिंग दिस और स्टार्टिंग द केस स्टडी और क्वेश्चन, किस तरीके से उसको रीड करना है। वंस अगेन, सबसे पहले जो आपका फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज, which tells you about the introduction of the case, of the organization, name of the organization, the industry, the segment, the competition, some sort of problem. ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पेज पे वो बता देता है। तो फर्स्ट सबसे पहले उसी को रीड करना है। डोंट गो विद रिक्वायरमेंट्स। वो गलत थॉट है कि पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेने। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। वंस अगेन आई से बी अ स्मार्ट रीडर, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। पहला पेज पढ़ना है पहले, जिससे आपको आइडिया हो जाए किस मुल्क में है, व्हाट्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट्स द एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सम सॉर्ट अबाउट गवर्नेंस, ये वो बहुत सारी चीजें आपको एक आइडिया हो जाता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सही है ना? उसी के साथ फर्स्ट पेज पे ही आपको जो एग्जामिनर इज गोना गेट यू द नोट्स टू द अकाउंट्स। आपकी अकाउंटिंग की टर्म में अगर हम बात करें तो आपको बता देगा कि व्हाट आर द अटैचमेंट्स, विल हैव बोर्ड मीटिंग और कस्टमर सर्वे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल बजटिंग, हमारे पास क्या क्या आगे अटैचमेंट्स है। Once you're done with the first page, जो पेज था सेकंड पेज पे है, तो आपके पास नाउ सेकंड पेज पे सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉब्ली आर रिक्वायरमेंट्स। फिर रिक्वायरमेंट्स को पढ़ें, सो दैट नाउ यू विल हैव द डायरेक्शन, कि अब आपके सामने डायरेक्शन होगा। और आपको पता है रिक्वायरमेंट भी ऐसी नहीं होती कि जस्ट द रिक्वायरमेंट, उसमें भी पूरी तमहीद बांधी होती है, सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी होती है, और उसके बाद यू हैव द रिक्वायरमेंट नॉट। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स एक दफा आपने पढ़ ली, अब आपके दिमाग में है कि व्हाट यू वांट टू डू, सही है ना? or what you all need to do it in this case study, सही है ना? ये आपके पास एक डायरेक्शन रहेगा, एक मैं कहूँ कि पता होगा वे टू रन, ठीक है ना? दिमाग काम करना शुरू कर देगा। Now then you have attachments, जो attachments हैं उसको फिर आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना? और relevant attachments। अच्छा जी, इस केस स्टडी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको थोड़ा लेसन भी देना चाहता हूँ। होप यू रिमेम्बर अबाउट दिस कॉस्ट लीडरशिप थिंग। कुछ याद है? माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। यानी बिफोर वी स्टार्ट द केस मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप देता हूं इसका। एंड वंस व्हाट डू यू कॉल दिस डिफरेंशिएशन थिंग, अगर आपको याद हो, फोकस डिफरेंशिएशन, फोकस स्ट्रेटजी, जिसमें फोकस कॉस्ट और फोकस डिफरेंशिएशन भी थी। अच्छा, ये चीजें दिमाग से निकाल दें। कई बच्चों के दिमाग में ये होती है, जो कि ज़ाहिर गलत कॉन्सेप्ट है। वो बोलते हैं यार, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद द कॉस्ट लीडरशिप, इसका मतलब कोई छोटा मोटा इदारा है, मे बी दे आर नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने कहा? सही ना? लोग ये सोचते हैं कि ओनली यू हैव टू हैव डिफरेंशिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी प्रोडक्ट हो आपकी जो फोकस डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएशन हो, एंड देन यू इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री, एंड देन यू कैन वर्क, एंड देन यू हैव द गुड प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक गलत सोच है। ये दो अलग अलग एरियाज हैं, एरियाज टू कम्पीट, सही है ना? ये माइकल पोर्टर ने दी है ना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, कि भाई आपने किस एरिया में खेलना है। एवरीबॉडी हैज कस्टमर हैज डिफरेंट नीड्स, सही है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन wealth, based on taste, based on religion, culture, age, there's so many segments. आप किस जगह उतर के खेलना चाहते हैं, सही है ना? What is your target audience? अब मिसाल के तौर पे अगर हम एयरलाइंस की बात करें, तो इसका मतलब तो यूरोप में या यूएस में जो all those budget airlines, they're near to bankruptcy, फिर तो हम यही सोचेंगे कि यार उनको तो कमाना ही नहीं है, तो why they started? उनकी बहुत बड़ी क्लास है जो कॉस्ट लीडरशिप पे जाना चाहती है, जो बजट एयरलाइन में सफर करना चाहती है, कि they just want a basic product, कि हमें जहाज में उड़ा दिया जाए, दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ऑफ बिग फैमिलीज और व्हाटएवर देयर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, दे वांट द प्राइस टू बी लो, दे डोंट वांट वाटर, फूड, कोई चीज उनको नहीं चाहिए।
नो बैगेज नथिंग। तो इसका मतलब उनके पास भी, उन इदारों के पास भी दे हैव बिग ऑडियंस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये जो हम इस केस स्टडी में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड जो कि स्मार्टवेयर का दिया है। तो पहले एक दिमाग बना लें कि ये बात किस पे करेगा। अब अगर हम थोड़ा यूरोपियन, क्योंकि केस तो उसने यूरोप और इसी कंट्री का दिया है, तो अगर हम थोड़ा इंग्लिश ब्रांड्स की तरफ आए, फॉरगेट अबाउट यूएस, इंग्लिश ब्रांड की तरफ आए, तो एक बड़ा फेमस ब्रांड, आप बल्कि इनके नाम सुनते रहते हैं आप, ज़ारा, सही ना, ज़ारा इज अ वेरी फेमस ब्रांड ऑल ओवर। और नेक्स्ट है, रिवर आइलैंड है, टॉपमैन है, सही नहीं है। उसके सामने यानी ज्यादा आप अगर कभी स्टडी भी करना चाहते हैं तो आप ज़ारा की केस स्टडी जरूर स्टडी करें, ठीक है ना, उसको जरूर देखें कि व्हाट इज देयर मार्केट एंड व्हाट आर देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। तो आपको ये नजर आएगा कि ज़ारा जो है quick, very fast pace पे they change the fashion, they bring new fashion। यानी ये यूं रोलिंग में रखते हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं उनको ये रोलिंग में रखते हैं कि भाई ये लिया, हफ्तों में, महीनों में बकायदा, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी 2 वीक्स फैशन चेंज हो रहा होता है, नई प्रोडक्ट्स आ रही होती है, इतना फास्ट। प्राइस अच्छा है, लोगों का बड़ा फेवरेट ब्रांड है ज़ारा, सही है ना, सब पहनना पसंद करते हैं, मुझे खुद उसका बड़ा फिट पसंद है। तो पता ये चलता है कि हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई 5 स्टार या हाई एंड प्रोडक्ट्स बना रहा है, नहीं, वो ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहा है कि बस लोग आए क्विक बाय करें, ठीक है। ऐसे और भी ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, ज़ारा उसमें ये बड़ा नाम है। ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जो बहुत क्विक करते हैं और अपनी कॉस्ट को कंपैरेटिवली थोड़ी सेल लगा के रखेंगे, थोड़ी कॉस्ट को कम रखेंगे फ्रॉम देयर सोर्स, एंड दे पास ऑन द डिस्काउंट एंड ऑल दैट, सारे कस्टमर के लिए क्विकली इसको एक्सेप्ट करना आसान हो जाए, सही है ना। जबकि उसी के सामने अगर आप दूसरे ब्रांड्स की तरफ चले जाएं, मिसाल फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम और हाई एंड ब्रांड्स की तरफ जाएं तो बोलते हैं गुची, एलवी है, ये सब, वो ये काम नहीं कर सकता कि जी हर हफ्ते हर महीने हम फैशन नया चेंज लेके आए। तो भाई अब क्या करेगा कस्टमर, क्या $800 के या $1000 के, अगर 1.5 लाख के जूते उसने लिए तो क्या हर महीने थोड़ी उसने लेना, although they targeting a big class or whatever, or maybe if they're targeting a regular class even, तो वो रेगुलर क्लास में बोलेगी कि okay we'll buy those shoes let's say 2 years time, 1.5 year, 2 years, maybe 2.5 year, इस तरह। ऐसा तो नहीं होगा कि हर हफ्ते ही चेंजेस हम लेते आए और हम ये करते हैं, तो इसका मतलब तो कस्टमर डिमोटिवेटेड, यार अभी मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की। तो एक अलग अलग क्लास है, बजट क्लोथिंग की अलग क्लास है, लो कॉस्ट अलग है। तो आज जो हम केस देखने जा रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मार्टवेयर टेक्नोलॉजी, क्या, स्मार्टवेयर, ठीक है ना, दिस ब्रांड स्मार्ट का नाम है ना, जवाब में टेक्नोलॉजी है। स्मार्टवेयर की व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, इट्स अ लो कॉस्ट थिंग, सही है ना। चाहे इसके अंदर एक क्रिटिसिज्म और ये सब आएगा, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ये लो कॉस्ट यानी टॉकिंग अबाउट द मास ऑडियंस, उसको कैप्चर करना है, एंड एट एनी कॉस्ट दे नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट सो दैट दे कैन पास ऑन द डिस्काउंट एंड सही है ना। तो ये दिमाग में रख के चलिएगा कि कोई डिफरेंशिएशन या हाई एंड ये सब, लेकिन ये चीज भी दिमाग में रखिएगा कि इसका ये मतलब नहीं कि दे आर फूल और दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, कि यार इतना सस्ते में बेच रहे, तो सस्ते में बेच रहे तो बेच के थ्रो करें, ये भी तो देखिए। ये सारी हमें गुफ्तगू करनी है। You must have the case study in your hand, like question paper वो आपके पास होगा, maybe you're using it electronically or whatever. I also have it. Let me see. Go here. Okay. Let's look here. Smartwear is a long established, आपको उसने बता दिया कि भाई ये किस किस्म का इदारा है, and it's a successful and long established clothing retailer in Norway, a highly developed northern European country. Okay, मुल्क का नाम बता दिया, which is currently in the middle of deep economic recession. Okay, economic recession, it means the audience, the target consumers, ये सब they're in bad conditions, सही है ना, बिल्कुल unemployment और ये सारी चीजें हैं। जब इसने बोल दिया recession, इसका मतलब सारी चीजें मौजूद हैं। The country is also experiencing a political uncertainty, क्योंकि इसके अंदर बताया coalition government, ऐसी गवर्नमेंट को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा क्रैश करती है, सही है ना। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें, सिंध हुकूमत और ये वो जहां भी हुकूमतें बनती हैं, when with collusion, तो उसके अंदर ये ब्लैकमेलिंग और ये सब चल रही होती है। Because of its collusion government, many influential commentators believe will not last for its full term of office, सही है ना, maybe it's not going to cover up 5 years. These two factors have contributed to record high levels of unemployment, low business, यानी confidence business का कम हो रहा है, सारी चीजें सही है, and obviously standard of living of general population goes down. The company also operates in 2 other countries, तो और मुल्क भी हैं, European continent, Southland and Central. Alright, तो first paragraph से आपको idea हो गया कि इदारा कैसा है, where they establish it, what sort of environment, what sort of political environment and economical environment. Smartwear has enjoyed long-term business success, okay, mainly due to the fact that it has carefully positioned itself towards the lower end of the clothing retail sector. Say now, not the wholesale and sourcing and all that, clothing retail sector. It sources its product directly from the supplier in low cost economies, let's say Bangladesh,
इंडिया, ये ज़ारा वारा सब इधर ही से बनवाते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, पाकिस्तान एंड ऑल दैट. Okay, from its supply low cost economies, and it has been able to target mass market, जो मैंने आपसे कहा, with consistently low prices. फैशन चेंज करो, लो प्राइसेस में नई चीजें लोगों को दो. This has meant that during the recent economic downturn in Noria, it has been able to profit from the growing number of price sensitive customer. Obviously, जब ऐसी जगहों की आप बात करते हैं, देखिए when you face the economic recession or deep depression, आप देखते हैं first of all who's going to file the bankruptcy? All those luxury boys, सही ना, जितने लग्जरी बिजनेसेस हैं, they need to file the bankruptcy. मिसाल के तौर पे अगर हम एक फर्नीचर स्टोर की बात करें जो लो कॉस्ट पे बात करते हैं, they will survive. क्योंकि लो कॉस्ट इकोनॉमी में भी, low economic recession, maybe people have this much spending power to at least satisfy the need. But when you talk about high-end thing के लिए you need to have high economy, big economy चाहिए जिसमें lower middle class सब वो ख्वाब देखें. लेकिन जब recession आता है तो वो तो अपना survive कर ही नहीं सकते, तो they need to collapse, या maybe delayering or furlough और ये सारी चीजें उधर से आता होती है. But देखो उसने कहा ना कि हमें इसकी वजह से भी there are price sensitive customer who have switched from the more high end to the, absolutely, not only you retain your own customer but your high end customer जो है, जो आपके competitors के पास थे, वो भी move होकर आपके पास आ जाते हैं because they are unemployed right now. सही है ना. तो market to budget retailers like Smartwear, who are the market leader in this high volume market. Absolutely. Smartwear's long-term strategy has always been based on a low cost, मैंने अभी आपको बताया, low price business model which is described through its mission statement. Mission statement आप सब समझते हैं, where or why organization exists, और उसके अंदर ये चीज नजर आनी चाहिए. They have given you the mission statement in I think attachment 1 or attachment 2, उसमें देखते हैं. However, following a prolonged period of expansion and growth, including successfully penetrating several other European markets, the company is for the first time experiencing a market downturn in both its operational and financial performance. This appears to be in part due to the economic pressure, absolutely, and the growing intensity of competition of its market both at home and at abroad. क्योंकि नॉर्वे में भी है and there are 2 other countries as well. लेकिन ज़्यादा growth कर रहे हैं सारी चीजें, तो obviously there is a cost. उसने का first time ये हुआ है कि हमारा इदारा downturn की तरफ है, operational financial growth. At a recent board meeting, obviously when there is a problem, then the big boys need to sit. At a recent board meeting to discuss the latest set of disappointing financial result, it was proposed that an external consultant, that's you are the consultant, you are not a student, you are the consultant, that's you to be appointed to investigate the deteriorating performance of Smartwear and propose the best way. Oh, absolutely. What are the attachments you'll be having? We'll be having briefing notes prepared by the business development department for the consultant. इसमें आपको बता देगा कि हमारा इदारा कैसा है और हमारा मिशन and all that thing, हमारी मार्केट्स क्या हैं. 1 is the board meeting, एक आपको board meeting दे दी जाएगी. आर्टिकल आ जाएगा एक किसी उसका नोरिया हेरल्ड डेटेड 21st Feb 2019, उसका आर्टिकल होगा. कंपैरेटिव मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा होगा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है ममालिक का, ये देखो ना, तीनों कंट्रीज का बता देगा, इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या है, कंज्यूमर डेट्स क्या है, ऑल दैट. Executive summary of the Smartwear internal audit report on supply chain management. What's the job of internal audit? यकीनन कोई value addition पे बात होगी, maybe they talk about some risk or maybe evaluation of controls and all that, तो वो भी देखना होगा. Customer database management, financial investment appraisal. Awesome. Capital budgeting, वो पूरा capital budgeting का चार्ट होगा, और ये तो आप ज्यादा अच्छा जानते हो, ये already done with F9 and P4 and all these things. उसमें आपको पता है किस तरह NPV and IRR, तो capital budgeting वो भी आपके सामने होगा. Let's move on. अब ये first page जब हमने पढ़ा तो हमें आइडिया हो गया कि भाई ये इदारा है कौन से. इसने आपको एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन दे दिया about the size, आपको साइज के बारे में बता दिया, about the segment वो आपको बता दिया, about their success stories वो पता चल गई, प्रॉब्लम रीसेंट वो पता चल गए, and you know what are the attachments you gonna see वो आपको बता दी. देखो फर्स्ट पेज में आपको बहुत सारी बात है, उनको अपनी ग्रोथ स्टोरी बता दी, in which countries they, सही ना, little about the environment, कितना प्रॉब्लम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में चल रहा है, सही है ना, ये सारी गुफ्तगू आपको उसने बता दी इन फर्स्ट पेज. यानी यू हैव द पिक्चर. फर्स्ट पेज से आपको पता चल गया कि इज इट एमिरेट्स एयरलाइन और इट्स स्पिरिट एयरलाइन और एयर फ्लाई दुबई और व्हाटएवर, सही है ना. क्या मैं इस वक्त आज गुची का केस देखने जा रहा हूँ, दिमाग आपका पूरा एक तरफ से सेट कर दिया, या मैं इस वक्त कोई H&M का केस या कोई लिवाइस का केस, कौन सा केस में देखने जा रहा हूँ, कौन सी मेरी ऑडियंस हो,
अब यू थिंक दिस वे, यू आर कंसल्टेंट, सही ना, आपके सामने अब आके क्लाइंट बैठ गया और अब आप पूरी गेम समझ गए कि आज मैं किस क्लाइंट को आई एम गोना हैंडल। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ द केस रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द टास्क बिलो। देखिए मैंने आपसे कहा कि केस की रिक्वायरमेंट के लिए भी छोटी छोटी उसने स्टोरीज दी हुई होती है। तो पहली जो केस की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल नजर आ रहा है कि जी अगर आप बोल्ड से जो है उसमें अगर आप देखें तो analysis the environment in which Smartwear operates and consider how this might impact its business model, mission and strategy. Environmental analysis दिमाग में आ रहे होंगे, pestle model आ रहा होगा, about the political thing, about the competition, about the economic factor, social factor, ethical factor, ecological factor, government laws, regulations, industry ups and downs, सारा total environmental analysis से कहीं आपसे नहीं कहा कि मैं आपके साथ वो बात करूंगा, what you call क्या कहते हैं कि सिर्फ माइक्रो एनवायरनमेंट में बात करूंगा, नहीं, या मैं कोई मैक्रो एनवायरनमेंट में बात करूंगा ना, उसने ऐसी कोई बात नहीं, उसने कहा all environmental analysis you do about this Smartwear। और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर तमहीद भी क्या बात है, it is apparent that the downturn in Smartwear performance can be in part attributed to external factors beyond the company's direct control, macro environmental factor normally। A recent national newspaper article, ओके ये सारी चीजें उसने बताई इसमें। और देखिए द बोर्ड ऑफ स्मार्टवेयर वांट्स यू टू फुली अंडरस्टैंड हाउ द जनरल एनवायरनमेंट इज इंपैक्टिंग। एब्सोल्युटली वी अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम, ये बात हमें पता है, और किस तरह हाउ वी इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट एंड हाउ द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस अस, ठीक है ना। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं व्हिच आर अनकंट्रोलेबल, फॉर एग्जांपल collusion between the government, कोई political instability क्या करे, या economical factor, अब inflation rate ऊपर जा रहा है, how can a retail store, mom and pop shop store and technological maybe organization how they can manage it, वो तो नहीं कर सकते, तो macro factor है। तो ऐसा होता कि dealing with the supplier micro factor होता, तो okay we can sit, we can talk, we can bring it, सही ना, maybe we can talk with our competitors, सब कुछ हम कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे factors हैं जिसको हम कैसे छेड़ेगा। अच्छा दूसरी रिक्वायरमेंट जो इसी में दी है वो क्या है, assess the major risk presented by Smartwear's current business model and suggest appropriate risk factor, कि भाई आपने ढूंढने हैं कि इनका जो बिजनेस मॉडल है, the way they source and the way they selling and their strategies and all that and their market, और जो इस वक्त इनका करंट बिजनेस मॉडल है उसमें क्या बिजनेस मॉडल में क्या रिस्क है, मेजर रिस्क आपको क्या नजर आ रहे हैं, हाँ उनकी ग्रोथ को देखते हुए, उनके पूरे ओवरऑल बिजनेस मॉडल को देखते हुए। So and then we obviously need not only you identify the risk and then you have to give the actions, और वो आपने बताने के how can we manage it, हम उसको कैसे minimize करें। You'll get the professional marks through evaluation skill, यानी आपकी assessment इसमें देखनी है कि आप कितना कैसा evaluate करते हैं, ठीक है ना, कोई आपका logical discussion है या नहीं है, ठीक है। Then the next requirement is about the board is becoming aware that Noria may not be the suitable country, यानी जहां पर ये 15 साल से हैं, they think it's not suitable anymore क्योंकि लड़ाई झगड़ा इकोनॉमिक ये वो सब है, operate successful 15 years ago for a business like Smartwear to operate successfully. The financial performance of a Smartwear in Southland, which is the other country they're already in, is significantly better, this is what the board think, then being achieved in more established homeland of Noria and in other Europe. सही है, ठीक है। तो अब ये सोचते क्या है, to help with this task you have gathered summarized information on the country of Southland, okay, where Smartwear opened its first retail outlet 6 years ago। ये दूसरा है, वो 15 साल वाला जो जहां पर आप existing हो, और ये दूसरा है Southland। Together with comparative data of Noria and neighboring country, आपको macroeconomic data दिया हुआ है, the company now has over 30 retail outlets in major towns and cities across, okay, Southland, no problem, यानी 6 साल के अंदर इतना कुछ कर लिया, where the economy is booming and Southland generates the most of, okay, revenue और सब कुछ। Prepare a report for the board, you need to write the report, analyze the company's strategic position in Southland market, not Noria, okay, in Southland market, like what is our position where we stand right now, और आपको पता ही है 6 साल से इन्होंने क्या किया, and to determine why Smartwear appears to be performing so well in this particular country compared to Noria। इसका मतलब ये हुआ कि Noria की बुराइयां दिखानी है कि why like we started with a founder in this country Noria जो कि बहुत established सब कुछ था, but why still we performing in the next country, जो दूसरा country जिसमें where we actually grow, सही है, जहां पहुंचे बाद में हमारे homeland के अलावा, क्या वजह है। इसमें आप थोड़ा डायमंड के बारे में भी सोच सकते हैं कि क्या वजह है इस वक्त, यानी कंपैरिजन ऐसा कैसा है, लेकिन आप ज्यादा देखेंगे करंट एनवायरमेंटल सिचुएशन कि व्हाई दिस
this is going good and why is performing bad. सही है ना, हमारे इदारे के लिए क्यों जो नौरिया जो हमारा फाउंडिंग जगह थी, जो हमारी बेस थी, जिसको हम कहें जो हमारा विफाक था, ठीक है, वो क्यों ऐसा हो गया और ये क्यों इतना सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है, यानी इसके बारे में नेगेटिव बात करनी है, एंड ऑब्वियसली टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस, टू व्हाई, सही है ना, इससे ये सोचना है, एंड ऑब्वियसली एनालिसिस स्किल आपकी चाहिए ना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो देखना चाहता है कि कैसे आप लॉजिकल कनेक्शंस इसके बनाते हो. ओके, नाउ द बोर्ड एग्रीड दैट अ radical response to the current situation was required to reassure investor and the stock market by showing them that the Smartwear board remain in control of the business. Obviously, यानी इसका मतलब आगे बोर्ड मीटिंग में ये बात आने वाली है कि institutional investors now they are alert, they are active कि भाई these organization, this particular organization Smartwear is going down, तो जाहिर है उनके they already invested, तो वो अब थोड़े परेशान हो गए, इनको उनकी परेशानी उनको comfort factor देना है, तो कैसे वो देना चाह रहे हैं, and was willing to take essential action where necessary. The board decided, they already decided that the company needed to rationalize its operation by closing the 20 worst performing retail outlets in Noria, जो हमारा विफाक है उधर से 20 आउटलेट माइनस कर रहे हैं, एंड विथड्रॉइंग इंटायरली फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री ऑफ सेंट्रम, completely operation shut down in Central, not in Southland, where Smartwear 15 retail outlets were there and heavy losses and all that. यानी इसका मतलब 3 ममालिक में ये नौरिया में they were not shut down completely, but major retail store वहां बंद करेंगे, Central complete down, Southland उसको चलते रहेंगे. आपसे क्या पूछा है, now you evaluate the strategic and ethical implication to Smartwear of the planned shop closure in Noria and the withdrawal from Central. देखिए ये बड़ी बात होगी ना, बात ये है इस रिक्वायरमेंट में आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपको आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मुझे ये बताओ कि if I go with this decision, obviously they have already decided for this closure thing कि हम ये इसको जो क्लोज करेंगे और इसको शट डाउन करेंगे, तो एक तो बात हो गई कि ठीक है टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक थिंग, ठीक है ना, कि इससे जाहिर है हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर पे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, लॉन्ग टर्म सक्सेस, वो तो एक बात हो गई, लेकिन एक बात तो आपसे कह रहा है कि इखलाकी तौर पे एथिकल इशू, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है ना भाई इदारों के साथ कि when the good time was going, let's say the company was at economic, the country was economic boom, everybody was fine, you started your organization, you're successful, you made some good asset and all that, जहाँ इदारे डाउनफॉल हुए मे बी ड्यू टू अर्थक्वेक, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है इखलाकी जिम्मेदारियों का, सोशल एंड एथिकल रिस्पांसिबिलिटी का, कि when we were good without any earthquake or tsunami and all that, and or economic recession or maybe war or anything, we were happy, you were happy, everybody was enjoying, सही ना, हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही थी, तुम भी बहुत कमा रहे थे, your shareholder enjoyed and all that. आज हमारे मुल्क पे, हमारे सिटीजन्स पे एक प्रॉब्लम आया and you just wrap your bag and you bye bye टाटा, सही, ये क्या है भाई, तो यहाँ पर एक सवाल शुरू हो जाता है, if the organizations they have a global brand, it's always a question mark कि यार ये क्या बात हुई, यानी इनके लिए एक बड़ा ग्लोबल मीडिया पर इसको कवरेज देता है कि भाई they are unethical. It's not only about you taking care of your shareholder, what about the society and all that, they're talking about this thing. ये अखलाकी जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो इदारे मुल्क रिसेशन में है और अब आप कहते हो कि हम वाइंड अप करें. What about those times जब आपने देखो इसमें लिखा long established organization, they enjoyed Noria and all that, and because of Noria they went Centrum, they went to this Southland and all that, और अब तुम इसी जगह को ताला लगा दो, बंद कर दो, तो इस पे आपको बात करनी होगी एथिकल, सही ना, इशू पे स्केप्टिसिज्म स्किल्स विद क्वेश्चनिंग माइंड, सही ना, जो जो ये बातें कर रहे हैं और इनकी जो बातें, तो उसको आपने लॉजिकली चैलेंज भी करना है. ओके, ऑलराइट, और इन्होंने इस बार प्रोफेशनल मार्क्स को बास्केट कर दिया, किसमें they were total 4, उसको 2 कर दिया. Let's move on. The executive summary of an internal audit report, ये वाली बात, ये अभी कुछ controls पे बात आएगी. On Smartwear supply chain management has been given to you by the chair of the audit committee. Okay, obviously internal auditor, they report to the audit committee and the CEO. The audit committee ने आपको दी. The report identified a number of significant issues in areas such as an appraisal of existing supplier performance and internal reporting provisions. Okay, on behalf of the board of directors, the chair of the audit committee has asked you, you are the consultant, to provide the buying and merchandising director with an objective appraisal of the supply chain and Smartwear effectively address the various. Okay, what is the requirement? Requirement क्या? Draft a memo to the buying and merchandising director. Okay, you'll be talking to the
purchasing guy, which evaluates the effectiveness of internal control system at the company, particularly on the procurement side, and recommend control improvement to rectify the identified areas of concern. इसका मतलब ये हुआ कि already controls they have, लेकिन they are actually weak controls. कंट्रोल होंगे but they are weak controls. आपने क्या करना है, आपने जो मेमो बनाना है for the purchasing guy, जिसमें आपने क्या बताना है, which evaluates the effectiveness of controls and plus recommendation how to improve it. इसको improve कैसे करना है, क्योंकि internal auditor ने भी जो report बनाई होगी which is already attached, and they're going to and recommends control improvement to rectify the identified areas of concern. Already the controls are there, but when they evaluated they found some serious weaknesses for the purchasing guy, merchandise or supplier और उनके लिए. तो अब क्या करना है, और देखो उसने लिखा भी है कि वो प्रॉब्लम क्या था, existing supplier performance appraisal, यानी कोई assessment नहीं हो रही, and there is no reporting में मसाइल है. ठीक है. Alright, यहाँ पर प्रोफेशनल मार्क्स आपको किसके मिलेंगे, a good business sense, commercial acumen, good business sense, good business knowledge and industry awareness. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Now, recently commissioned market research has concluded that the Smartwear appears to have no clear understanding of profile of its customer mix. No customer data as such. या अगर है भी तो वो smartly use नहीं हो रहा. मिसाल के तौर पे बच्चों ने सारे पेपर पढ़ लिए, still they getting message of ACCF. What is this? It means you have the customer database but not intelligently used. Ultimately लोग क्या करेंगे, they're gonna unfollow. यार ये क्या हो, maybe they'll block your number. ऐसे ही होता है ना भाई. ACCF पूरा हो गया है, फिर से ऐड आ रही है as वो part 1 की, क्या आ जाए, we'll have workshop or we have what. फिर तो अजीब सी बात होगी, यार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हमें पुरानी बातें याद दिला के यानी हमें और तंग कर. तो ये वाली बात यहाँ भी ऐसा ही है कि they don't have actually a good customer database thing. तो बोला हो क्या रहा है, and as a result quite unsophisticated and ineffective marketing campaign is going on. Okay, recent financial results indicate that Smartwear is finding it's hard in both retain and get good repeat business from existing customer. Absolutely, when you're not talking directly or when you're not talking when you're not sending a relevant information, relevant email, relevant messages, वो भेज ही नहीं रहे हो target audience को, तो क्या होगा, ultimately people will go, communication है ही, and the company is clearly losing market share. Absolutely, the sales and marketing director has been considering, यार ये केस के अंदर पढ़ने का बहुत ज्यादा था, इसका मतलब words बहुत ज्यादा है. The sales and marketing director has been considering the development and implementation of a sophisticated customer database management system incorporating a customer loyalty scheme to replace the existing very basic customer database. The marketing department has undertaken a financial, बिल्कुल ये अब वो NPV वगैरह वाली बात कर रहा है. ठीक है, अब आपसे क्या पूछे, write a report on behalf of the sales and marketing director, on behalf of the sales and marketing director to present to the board. यानी you actually helping him, sales and marketing director, लेकिन actually you communicating to the board which achieves both of the following. यानी ये दोनों चीजें उस रिपोर्ट में, A और B. पहली बात, describe the benefits of introducing a CDM, customer database management system, including the loyalty scheme for Smartwear. सबसे पहली बात कि भाई उसके अंदर सबसे पहले बेनिफिट हो, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सीधा सीधा हमने तो ये लिखना है कि what are the benefits of CDM. No, benefits of CDM for this खास organization Smartwear. अच्छा, उसके बाद इस दफा भी commercial equipment, obviously you talk about the investment thing. दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, in the same report you'll be writing, in the same report, यानी कि एक ही रिक्वायरमेंट होगी, evaluate the marketing department's NPV analysis that support the CDM investment, questioning any underlying assumption made. वो जो उन्होंने कैपिटल बजटिंग दिया होगा, और इसमें हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली रिक्वायरमेंट होती है कि जो इन्होंने असम्पशन लगाई है आपने उसको देखना है whether यानी you actually evaluating that thing. देखो ना लिखा ना evaluate that capital budgeting thing, वो जो पूरा पेज है उसको evaluate करना है कि they talk about the capital investment outlay, they talk about the tax, इतना benefit होगा, this is going to be done, these are the assumptions and all that, but using your skepticism skill. ठीक है, let's move on. One more requirement, यानी 3-4 पेज से रिक्वायरमेंट ही चल रही है. अच्छा, ये रिक्वायरमेंट जरा हटके, integrated reporting, integrated thinking and integrated reporting. Severe criticism was forwarded to the chairman of the Smartwear from an influential institutional shareholders about what it perceived as the short-sighted and narrow focus of the board on the low cost, low price business model. However, the board considered the critics to be unjustified. Okay, if you think that it's unjustified, why are you only providing the financial results? Let's talk about the integrated reporting. यही इन्होंने सेट किया होगा. The board believes that the most
probable reason for the criticism is a lack of understanding. वो ये कह रहा है ना, बोर्ड ये कह रहा है कि why these guys are criticizing, why these institutional investors, shareholder, outsiders, external stakeholder, why they are criticizing us. बोले ये हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? बोले ये इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि समझ नहीं रहे, और समझ इसलिए नहीं रहे because we not actually make them understand. और हम क्यों उनको नहीं समझा पा रहे हैं? Because we only providing them financial result, और वो इसको समझ नहीं पा रहे. तो how about we give them about the financial, about the environmental, about the operation, all that, which you call it integrated reporting. वो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम क्या करें, हमें communicate with the investor and the wider stakeholder community. The board of Smartwear decided to adopt its own version of the integrated reporting. यानी बोला हमारा अपना version integrated reporting है, the way we want our stakeholder to be understood, to explain them. सही ना, उस तरह उनको समझे, ठीक है ना. The board unanimously agreed that the best result would be achieved when the company takes a more holistic view of its operation and performance and all that. सही है. You have been asked by the CEO to help him. क्या help करनी है भाई? Requirement. Prepare one slide with appropriate notes. Obviously slide इसलिए कि आप एक view दे दें उसमें कि 1 2 3 points दे दिए. Notes, that's the real answer. जिसमें आप explain करें with appropriate notes for a brief presentation to be given by the CFO at the next board meeting which describe the benefits. ये वाली बात, यानी ये आपसे ये जो पीछे बात हुई थी ना CDM वाली बात, पहले क्या बोला था कि customer database management, what are the benefits you can explain to the board. यहाँ पर आपको क्या बोला कि भाई तमाम ये जो Smartwear है, हाँ, if we start doing this integrated reporting thing, what are the benefits we'll enjoy as a Smartwear and our stakeholders, from our stake to all our stakeholders, not only shareholder. इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, stakeholder पे बात की कि तमाम stakeholder. लेकिन दूसरी requirement जो है, now they talk about the shareholder. Prepare a briefing paper for the CFO to allow him to address the wider finance team. अब वो अपने department से बात करेगा. The first report was about to the board, कि board को समझाना है कि how this integrated reporting going to help to the Smartwear and all these stakeholders, wider stakeholders. जबकि दूसरे में उसने कहा कि अब तुम एक ऐसा पेपर बनाओ जिसमें CFO is going to address his own team, अपनी टीम को, wider finance team, to explain how corporate reporting, जो तुम्हारे IAS, IFRS and all that reporting, financial statement under the IR framework provides more relevant information for a Smartwear shareholder about the creation of sustainable long-term value. All right. और इस दफा इसमें रिक्वायरमेंट दी है कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि उसमें आपने परसुएट करना है, आपने दो अलग टीमों से बात करनी है, आर्ग्यूमेंट्स आपके कैसे होने चाहिए, फ्लो ऑफ सेंटेंस एंड ऑल दीस थिंग्स. ऑलराइट, तो इसका मतलब आपने रिक्वायरमेंट देखी कैसी थी. एनवायरमेंटल एनालिसिस की एक रिक्वायरमेंट है, रिस्क की एक रिक्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की एक रिक्वायरमेंट जिसमें देयर आर 2 ऑडियंस, सीडीएम की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल बजटिंग है आपके पास, यू हैव इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. इट्स अ चैलेंजिंग पेपर, मैं इसको थोड़ा चैलेंजिंग कहूंगा, ठीक है ना, जो वाजे में आपसे रियलिस्टिक बात करूं. इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट, इफ यू मूविंग फ्रॉम इफ यू शटिंग डाउन योर ऑर्गेनाइजेशन और योर मेजर ऑपरेशन, देन व्हाट विल हैपन. तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें देखो इसमें पूरा इट्स कंप्लीट एक्सप्लेन. ऑलराइट, एग्जिबिट 1, क्या एग्जिबिट 1 में दिया है? मैंने आपसे भी कहा था कि भाई ब्रीफिंग नोट्स, बिजनेस डेवलपमेंट फॉर द कंसल्टेंट, आपके लिए इन्होंने ब्रीफिंग नोट दे दिए, बता दिया. देखो मिशन, देखो मिशन के अंदर सारी चीज नजर आ रही है. कैसा है? आवर मिशन इज टू मेक द वाइडेस्ट रेंज ऑफ गुड क्वालिटी फैशन, good quality fashion which is responsibly sourced obviously by other countries and all, available to everyone at affordable price. उसी के अंदर उनकी स्ट्रेटजी भी नजर आ रही है, राइट. मिशन, फॉर एग्जांपल मिशन में कहता हूं टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन कॉस्ट इफेक्टिवली. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये क्वालिटी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, and they talk about not the high differentiation thing but affordable price. इस तरह to achieve the mission the board has agreed the following strategic goals. Okay, ये आप स्कैन करेंगे क्या क्या इनके छोटे गोल्स हैं, ethical goals, sourcing goal and all that. Then they have this governance arrangement, वो उन्होंने दे दिया कि हमारे board of directors कैसे, how many NEDs we have EDs. देखो ना, Smartwear as a balanced board of directors, most of whom have been with the company for more than a decade and whose responsibility cover all of its core business function. The 5 non-executive directors ensure that the board and the company remain fully compliant with code of corporate governance, listing requirement and all that. The NEDs being part of unitary board, multi-tier board नहीं है, unitary board है, single board है, सही ना, discharge the duties and all that. Then business development, since it was listed on Noria Stock Exchange 5 years ago, Smartwear has enjoyed
Metroid's success, at what time it had only 40 retail outlets in Korea, but since all that, ये बातें उसने पहले भी लिखी. Okay, industry analysts have remarked that Smartwear has never exploited e-commerce opportunities. ये वाली बात, यानी इसका मतलब इनको e-business का इतना पता नहीं है, तभी तो CDM वगैरह इनका बहुत डिस्टर्ब है. When there have been several new entrants into the market in the past few years who only sell online. एक वैसे एक बड़ा practical मसला है ना कि जो पुराने बाबे हैं, the traditional, they're working and they are slowly moving towards this e-thing. The new people, they just come in, grab the whole market without any physical store, selling just online. ये बहुत होगा. अगर आप कराची में ही देख लें, Pizza Hut and 14th Street Pizza, जिनको अगर आइडिया है कराची की पिज्जा मार्केट का, तो उनको पता होगा कि किस तरह पिज्जा हट की मार्केटिंग होती थी. ह्यूज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बिग स्टोर्स, ऑल दैट, नो ऑनलाइन, नथिंग. सही है, ऐसा तो वो भी ऑनलाइन और सारी चीजें उन्होंने की, टेक अवे एंड ऑल दैट. लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आते ही डायरेक्टली ग्रैब द मार्केट, बिग मार्केट, और बड़ा टफ टाइम दे दिया था इन्होंने इन सारे, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैड टू रिटेन द फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल, देयर आउटलेट्स एंड ऑल दैट, एंड दे वर नॉट रेडी एक्चुअली. जबकि दूसरा है, उन्होंने एक छोटे से स्टोर से, या मे बी विद द बैक ऑफिस और मे बी विद द घोस्ट किचन एंड व्हाटएवर, अपने घरों से शुरू किया, धड़ाधड़ पिज्जा बेचना शुरू कर दिया. द डिमांड वाज रेडी, पीपल वांट लाइक गुड स्मार्ट प्रोसेस, इजी प्रोसेस विद जस्ट क्लिक, बूम. और प्राइस में दे आर कॉम्पिटिटिव, एब्सोल्युटली कॉम्पिटिटिव तो रहेंगे ना प्राइस में. जब देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, ऑब्वियसली यू पास ऑन द डिस्काउंट. तो ऐसे बहुत सारे पिज्जा पार्लर खुले एंड द घोस्ट किचन काम करते रहे, सप्लाइंग ऑल ओवर द सिटीज, कंट्री, सब चला रहे. तो ये वाली बात इसने लिखी है, ठीक है ना, बिजनेस. देन देयर इज अ बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग उसी बारे में हुई, अगर आप पढ़ेंगे कि भाई वो चेयरमैन ये कह रहा है कि वी हैव दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड नॉन एग्जीक्यूटिव. यानी पूरी बोर्ड बुलाई, यूनिटरी बोर्ड है, तो जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठे और नॉन एग्जीक्यूटिव भी बैठे. फिर ये फाइनेंस डायरेक्टर ने अपनी बात की है, लेकिन साथ साथ एनईडीज जो है वो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव द एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग चैनल. अगर आप देखें कि आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एनईडी क्या कह रहा है, but I have something important to add at this point, as it may alter what you say next. One of our larger institutional investor contacted me because we have other okay, stating in very clear terms that they were dissatisfied with the level of returns, the profitability and the dividend and the EPS and all that they are currently getting on the investment in Smartwear. They have seen a significant fall in share price value and are concerned about whether there would be any proposed annual dividend now. देखिए, एक तो ये एनईडी का बड़ा वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, इस पे फाइनेंस डायरेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आगे एनईडी ने एक और बात की. दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फर्दर सजेस्टेड टू मी दैट strategic direction of the company is completely wrong. यानी that's the thinking of the institutional investor. ये उसने बोला. और and that Smartwear has become out of touch with its core customers. Absolutely, ये तो सही बात बोली. He suggested that this is the main reason why the company has been losing sales to competition and all that. I'm afraid that simply informing our investor that things are as bad as they thought will not reassure them about the board's ability to turn around the business. The absence of detailed and accurate information. Absolutely, we talk about integrated reporting and all that. Therefore, I propose that we engage the services of an external consultant. जो क्या, ठीक है. तो ये बोर्ड मीटिंग है, इसको आपने देखना है. उसके बाद ये इन्होंने दे दिया है वो आर्टिकल जो इनके मैगजीन में आया कि having already suffered more than 3 years of economic misery, there is still no end. यानी नजर नहीं आ रहा. देखो ना, नोरिया में ये मसला है, economic recession and all that. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है कि हम संभाल लेंगे अगर चल गया, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा, यानी if the business are operating this way, if the people are doing this, तो बोला इस साल के बाद निकाल लेंगे अगर ऐसे चलता रहा. लेकिन आपको पता है ये क्या करने वाले, ये तो बिजनेसेस तो अपने बंद करने वाले. देखो ये बात यहाँ लिखी है. Then it seems that an economic recovery may start as early as next year. That is our expectation, but we have to wait and see. देखो ये बात उसने second paragraph में लिखी है. So if we are able to successfully survive the 2019 period without any more important business going into liquidation or heavy job losses. क्यों? क्योंकि once this Noria, this is actually relevant to that Noria thing. Sorry, Noria कह रहा हूँ, Smartwear shutdown decision. लेकिन एक तरफ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का प्रेशर भी, दूसरी तरफ इकोनॉमिक इश्यूज भी है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है ना. ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं. लेकिन जाहिर है अगर ये बंद करेंगे with all these stores, what will happen? Ultimately टैक्स कट होगा, सेल टैक्स हो जाएगा हाथ से. जाहिर है जो लोग बाइंग कर रहे थे वो अब कहीं और से बाय करेंगे, मे बी आउटसाइड द कंट्री एंड ऑल दैट.
एम्प्लॉयमेंट जाएगी, यानी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, ना अदर बिजनेसेस दे लूज देयर कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें जो ऑब्वियसली हिट करेंगी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को, सही है ना। देन वी हैव दिस मैक्रो इकोनॉमिक डाटा जो उन्होंने दे दिया कि भाई पॉपुलेशन क्या है तीनों कंट्रीज की, वर्क एज पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको दे दिया, एवरेज एनुअल अर्निंग क्या है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट क्या है, हाँ उसको आपने लिंक करना है, इन्फ्लेशन का रेट दिखा दिया है, एंड व्हाट्स द फ्यूचर, स्टेबल है या राइजिंग है क्या, कंज्यूमर डेट वो दिखा दिए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम बता दिया, वेदर इट्स अ डेमोक्रेटिक इकोनॉमी एंड ऑल दैट। ये P1 और P3 के पेपर में वो ये बहुत बताता है कि वेदर देयर इज एन ऑटोक्रेटिक इकोनॉमी, हाँ कोई आर्मी मार्शल लॉ ये लगा हुआ है, या डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, क्योंकि सम टाइम यू डोंट, हाँ इफ यू आर डेवलप्ड नेशन ऑल दैट, यू डोंट सोर्स विद दोस कंट्रीज वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी। ये वाली बात ये बाकायदा P1 में बहुत करता था, जो हमारे पास पहले पेपर था बिफोर दिस SBL, तो इसमें भी आप देखिएगा कि देखो उसने बात की ना कि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि यू ओनली सपोर्ट दोज कंट्रीज, ये एक वेस्ट का प्लस पॉइंट है कि हम उस ममालिक को सपोर्ट करेंगे जो टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड ऑल दैट, चाइल्ड लेबर ना हो, ये सब ये सोशल वगैरह हो गए, प्लस दे हैव द यू नो द बेसिक राइट टू वोट और डेमोक्रेसी ऑफ प्रॉपर। अगर डेमोक्रेसी नहीं है, इफ दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग थिंग एंड एग्रेशन और ये सब है, वी नॉट गोना सपोर्ट दोज कंट्रीज। तो ये वाला एक बड़ा मसला। फिर उसके बाद डोमिनेंट बिजनेस सेक्टर तीनों मुल्क के बता दिए कि कहाँ पर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, या रिटेल है, या शिपिंग है, एग्रीकल्चर है, व्हाटएवर, ठीक है। ये सब चीजें ज़ाहिर है ऑब्वियसली वन विल बी डूइंग द केस वहां पर हमें देखना। अब एग्जिबिट 5 में दे टॉक अबाउट दिस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जो कि इवैल्यूएट उन्होंने की थी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि this report analyze the effectiveness of supply arrangement between Smartwear and its core competitor। देखो दो चीजें इन्होंने बोल्ड कर दी है। फर्स्ट वन, appraisal of existing supplier performance, यानी there is no appraisal as such। देखो there have been no reported instance when purchase orders have not been completed on time in full। मतलब 5 साल हो गए। This had to be rather complacent attitude from the buying department who do not see the point in fixing something that is not broken। okay, यानी जब तक कोई चीज होगी नहीं, there is no reporting system actually, केवल वो evaluate करते नहीं। As a result, if no quality problem arise, the buyer rarely contact the supplier। okay, no effort is made by the buying department during a contract period to compare what prices, हाँ यानी एक तरफ से if the things are going on, वो बोलते हैं बस चलने दो, they don't do environmental analysis, maybe we find some good quality sourcing, maybe comparatively good pricing, बोला ये सब कुछ करने को तैयार ही नहीं है, एक जो चीज चली आ रही है they find it क्योंकि they don't do regular review। The allegation that have been made about poor working condition, ये वही वाली बात आ गई, फिर वही child labor और वो सारे factories have gone unchallenged and even possibly unnoticed by the buying team। If the supplier had been more effectively monitored, then the buying department would have identified a clear contravention of the general terms and conditions जो इनके आपस में agreement होंगे। These standard terms are a reflection of a Smartwear's own corporate social responsibility। okay, दूसरा मसला जो है वो है reporting weakness। There is an expectation that any serious breach of supplier performance or unacceptable behavior would be reported to senior management so that an appropriate and measured response could be made। However, the word serious, yes, ये मुझे याद है एक दफा पहले भी केस आया था कि when we have a serious accident, now serious is a subjective term। आपके नजदीक जो सीरियस है, मे बी आई डोंट थिंक इट्स सीरियस, जो चीज बोर्ड के नजदीक सीरियस है, मे बी द सप्लाई चेन मैनेजमेंट दे डोंट टेक इट सीरियसली, वो बोलते हैं ये सीरियस थोड़ी है। सही है ना भाई, सीरियस एक्सीडेंट क्या होता है, डिफरेंट व्यूज। सही है ना, वो बोलेगा यार हाथ पैर टूट जाए देन इट्स सीरियस, कोई बोलता है यार गिर गए बस सीरियस है, कोई बोलता है बिल्कुल you are bad for next 5-6 years, that's serious। serious is a subjective term, so देखो the word serious is rather subjective and it is entirely to the buying department whether or not to escalate any matter। consequently, if a serious issue is not raised, then the buying and merchandise director would not be aware of any problem। जब तक वो ये नहीं सोचेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। we'll talk about the case study जब हम आंसर पर बात करेंगे। सही है ना, this represent a serious internal control weakness, absolutely। अच्छा, उसके बाद जो आप आखिरी अटैचमेंट देखते हैं वो आप लोग हर दफा देखते रहते हैं, बजटिंग कि किस तरह, यानी दिस इन्वेस्टमेंट इज अबाउट द CDM, जो उस एप्लीकेशन पर उस सिस्टम पे डेटाबेस पे जो पैसे लगाने वाले हैं।
कि what would be the investment outflow and what are the inflows, what are the benefits and all that, और उसके नीचे उन्होंने notes भी दे दिए कि this is going to be the tax rate and staff training और ये और वो सब कुछ. A new $38 million will be taken to finance the project. Okay, the Smartwear average cost of capital is okay. It is estimated the CDM will directly generate additional foreign शुरू कर देगा पैसे बनाना. Okay, that's all. So okay, it's a good paper, challenging paper, and absolutely it's SPL. और आप ज़ाहिर है एग्जामिनर से एक अच्छा पेपर ही एक्सपेक्ट करते हैं. कभी कभार हो जाता है कि चॉकलेट पेपर आ जाते हैं, अदरवाइज एक टफ चैलेंजिंग होता है. That's how you know you're raised on those 3 months, 6 months, whatever, when you are doing your preparation and all that. सही है ना. तो उसमें ज़ाहिर है आपको सारी चीजें, and that's why you do the whole course and the whole course outline or everything. वो आप सारी चीजें क्यों देखते हो? इसीलिए get ready for the challenge. क्योंकि for once again, when you are a consultant, when you are sitting in your office and you open the door for the customer coming in, इसका मतलब examiner जो अंदर आ रहा है और customer आ रहा है, he may come up with any case, come up with any problem. ऐसा थोड़ी होगा कि आपने अपने consultant है आपने बाहर लिख के लगा दिया I only take easy cases. ऐसा नहीं है. आपको जाहिर है ये तमाम cases इनको देखना है. हर किस्म के केस आपके सामने हो सकते हैं. All right, so let's do the answer thing. We'll have 2 more meetings and I'll see you in the next class. फिर हम देखते हैं. आप भी देखें और उसके बाद आपने क्या करना है. Once you're done with understanding the case, reading the case and all that planning, उसके बाद आप खुद से पहले solve करें and then you start watching the other remaining 2 meetings. उसमें बात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखें and you have a great day. Thank you. Bye.